हाँ, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। यहाँ की रस्टिक ब्यूटी से, समंदर जितने बड़े क्रिस्टल क्लियर अल्पाइन लेक से, बर्फीले पहाड़ों की छांव में बसे इन रंग बिरंगे कैनियन से, दूध से भी ज्यादा साफ नदियों से, या फिर दुनिया से दूर दराज रहती उन रिमोट सेटलमेंट से। किर्गिस्तान इज द लैंड ऑफ नोमैड्स, यर्ट्स, ईगल्स, हॉर्सेस, माउंटेन्स एंड इनसेन ग्रासलैंड्स। द लैंड ऑफ रगेड नेचर एंड वास्ट रिमोटनेस। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ना सिर्फ यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बल्कि उससे भी कम इसके बारे में जानते हैं। किर्गिज व्हाट? ये कहाँ पड़ता है? ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान सेम है क्या? वहाँ क्या है? Why do you want to go there? भाई सेफ तो है ना? तो बस इसी तरह सवाल तो मेरे भी काफी थे, और जब भी किसी को बताया कि किर्गिस्तान जा रहा हूँ तो ये वर्ड स्थान सुन के सबके मन में एक डाउट, एक डर सा तो आना काफी कॉमन था। तो बस इन्हीं सब डाउट्स और फियर्स के बियॉन्ड अगर आज आप मेरे साथ इस अनोखे किर्गिज एडवेंचर पे चलने के लिए तैयार हैं तो चलता है फिर। Kyrgyzstan is a small landlocked country which is bordered by Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west, China to the east and Tajikistan to the south. Mountains cover about 90% of the territory of Kyrgyzstan और ये उन कंट्रीज में से है जहां इंडिया से पहुंचना काफी आसान है। यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स तो नहीं है, that's why we flew from Delhi to Kazakhstan's capital Almaty. किर्गिस्तान के लिए इंडियंस को ई वीजा लेना होता है, बट कजाकिस्तान इज वीजा फ्री फॉर इंडियंस फॉर अप टू 14 डेज। यहाँ उतरते ही सबसे पहले रास्ते के लिए सिम लिया, थोड़े पैसे निकाले, एक दो कैब्स वालों से नेगोशिएट किया एंड ऑफ वी वेंट टू किर्गिस्तान। Since we arrived late in the night, so most of our 4 hours journey was in dark. But after crossing the border from Kazakh to Kyrgyz, we got the first glimpse of the country. Early in the morning, Bishkek seems like a sleepy town living in the shadow of towering snow-clad mountains. Its laid-back energy rubbed off on us, and that's why we just checked into our B&B, kept our luggage, and simply crashed. Reaching a place at such early hours in the morning has its own pros and cons. Early check-in मिल गया और पूरा दिन भी, but until I'm well rested, I just roam around like a zombie. So after a couple of hours of sleep, a strong cup of coffee and a comfortable place to stay, we slowly got ready to explore Bishkek. Bishkek is surprisingly quite westernized, with well-paved roads, everybody diligently following the traffic and lane rules, and all these restaurants and cafes at every corner. The first impressions of the city really surprised me. But a good thing about Bishkek is that the nature, landscapes and countryside are not very far off. And in a matter of an hour or hour and a half, you can leave the concrete jungle and find yourself amidst rivers, valleys and mountains. So our destination was Chunkarchak, which is located only 45 kilometers from the capital Bishkek and is a great destination for a day trip, whether in summers for hiking and picnics or in winters for skiing. बट ये 45 किलोमीटर का रास्ता 60 किलोमीटर का बन गया जब गूगल मैप्स हमें किसी और ही डायरेक्शन में ले गया. So the first learning of the day, when in Kyrgyzstan, ditch Google Maps and instead install Maps.me or 2GIS. They are also not 100% reliable but still better than Google Maps. So as we came back on the track, we were surprised by the vastness of the landscape. The road was winding as if someone has deliberately made it so that one can enjoy a different angle of the view after each bend. सही में ऐसा लगता नहीं है, बिश्केक के इतने पास ही हैं हम, बट स्टिल द लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड एकदम ड्रास्टिकली. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था जब हम लोगों ने हल्का चढ़ाई शुरू की तो पूरे जितने भी माउंटेन्स थे देवर उस पर ग्रास एकदम सूखी हुई लग रही है. द माउंटेन्स लुक्ड ऑल बैरन, बट अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो ग्रीनरी दिखनी शुरू हो गई और जितना फर्दर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ग्रीन है और हमें जो ये ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं इसके भी बियॉन्ड अभी जाना है. तो आई एम अज्यूमिंग एज वी गेन हाइट तो और हरियाली आनी शुरू हो जाएगी. बट लुक एट द रोड यार.
As we reached Chunkarchak, the valley opened right in front of us, as if it was spreading its arms to give us a welcoming hug. Chunkarchak is nestled amidst the gorgeous countryside filled with large valleys, rolling mountains and rippling rivers, and serves as a visual reminder of the country's stunning natural splendor. With vivid colors of the scenery and peaceful countryside surroundings, it is certainly one of the most picturesque and serene destinations around Bishkek. किर्गिस्तान में ट्रैवल करते हुए इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल फाइंड कैफेज और रेस्टोरेंट्स आउटसाइड द मेन सिटीज, बट दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव पिकनिक्स वेरेवर एंड व्हेनेवर यू वांट. हमें भी जो कुछ भी सुपरमार्केट में मिला वो कैरी किया और इस छोटी सी नदी के किनारे कुछ घंटों के लिए अपना डेरा जमा लिया. चुंकरचाक में मुझे लोगों से ज्यादा घोड़े दिखे. किर्गिज लोगों के लिए उनका घोड़ा सब कुछ है. अ फार्म एनिमल, अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो अ गुड ट्रस्टेड फ्रेंड. चुंकरचाक से जाते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि ये और बिश्केक दोनों कितनी अलग दुनिया लगते हैं. इट इज इंडीड अ लग्जरी कि एक सिटी लाइफ जीने के साथ साथ आप इन वादियों में जब मन चाहे पहुंच सकते हो. कहने को भले ये एक छोटा सा वन डे और इवन हाफ डे गेटअवे ही हो, बट इट पैक्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक रोड ट्रिप, ऑफ रोडिंग, प्रिस्टीन सराउंडिंग्स, रिवर साइड पिकनिक्स एंड जस्ट लेटिंग योरसेल्फ बी वन विद नेचर. Bishkek might not exude romance, but it is undeniably intriguing. It's a very pedestrian-friendly city, so moving around by yourself is quite easy. On the first day, one can explore the imposing concrete spectacle of Alatu Square, home to the State History Museum. Victory Square, another grand example of Soviet architecture, is equally fascinating. But to me, the most pleasing to the eyes were the greenery and the parks all around the city. पैदल चलने के अलावा द नेक्स्ट बेस्ट वे टू कम्यूट विद इन द सिटी इज बाय कॉलिंग अ कैब थ्रू Yandex. जैसे इंडिया में वी हैव उबर एंड ओला, Yandex Go भी वैसा ही एक टैक्सी और फूड डिलीवरी ऐप है. यू कैन पुट द डेस्टिनेशन, चूज द टाइप ऑफ कार यू वांट एंड पे बाय कार्ड और कैश. Salamat Sizba from Kyrgyzstan. तो सलामत सिज़बा इज़ देयर वे ऑफ सेइंग हेलो. हम लोग अभी हैं नवाद टी हाउस या फिर जिसको नवाद चाय खाना भी बोलते हैं. यहाँ पे इतने सारे मीट के ऑप्शंस हैं और बहुत ही कम वेज के ऑप्शंस हैं. और आज ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होने का मन नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली हॉर्स मीट इज़ व्हाट दे रेलिश. और उसके अलावा यहाँ पे you'll get बीफ, you'll get लैम्ब, चिकन के भी ऑप्शंस बहुत कम हैं. तो जब तक अभी हम अपनी मील्स या फिर अपना मेन्यू फाइनल करते हैं, तब तक इन्होंने हमें दिया है चलप. चलप इज़ देयर नेशनल ड्रिंक
जो देखने में दूध जैसा ही लग रहा है, बट ओके, इट्स नॉट दूध, इट्स बटर मिल्क। तो हमने ऑर्डर किए हैं 3 डिशेस। एक है मरकोवचा। मरकोवचा इज़ देयर कैरेट सैलेड विद सम ड्रेसिंग ऑन इट। मुझे नाम बड़ा अच्छा लग रहा था और देखने में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लग रहा था। गरम दिन के लिए कुछ सम क्रंच एलिमेंट, सम फ्रेश एलिमेंट वो चाहिए। दूसरा हमने किया है मांती। सो मांती इज़ वेरी सिमिलर टू हमारे यहाँ जो मोमो होते हैं। दे ओवर हियर दे कॉल इट सेंट्रल एशियन डम्पलिंग्स। तो इसमें अगेन अलग अलग मीट के ऑप्शंस रहते हैं। वी हैव आज के लिए वी हैव ऑर्डर्ड पोटैटो एंड चीज़ ओनली। एंड उसके अलावा हमने ऑर्डर किया है लगमन। लगमन एक इनके होम मेड हैंड रोल्ड नूडल्स डिश होती है। वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अगेन ईदर विद हॉर्स मीट और विद बीफ सर्व होती है। थैंकफुली ओवर हियर दे हैड वेजिटेरियन ऑप्शन एज वेल। Exactly how we get momos in our country. It's just that यहाँ फिलिंग में उतने वेजिटेबल्स नहीं हैं। दे जस्ट हैव पोटैटोज एंड चीज़ जो हमने ऑर्डर किया है। कमिंग टू मरकोवचा, अ वेरी माइल्ड ड्रेसिंग ऑफ आई थिंक सम गार्लिक सॉस विद probably salt and pepper. So these are really long noodles. जो फ्लेवर्स हैं सारे वेजिटेबल्स के, उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है जो भी इन्होंने सॉस डाली है। आई थिंक द ओनली थिंग दैट दे हैव पुट इन इट इज़ जस्ट ब्लैक पेपर, बट वो भी ऐसा नहीं है कि चुभ रही है या तीखी है। ऑल इन ऑल, आफ्टर ट्राइंग ऑल द 3 डिशेस, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अभी तक कुछ तीखा नहीं है, विच इज़ अ बिग प्लस फ्रॉम माई साइड। सिटी में घूमते हुए बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि ये एक फ्रूट पैराडाइज है। इफ यू कम ड्यूरिंग द सीजन, मार्केट्स आर फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, incredibly fresh and tasty. In summers, you'll find plenty of nectarines, watermelon, cherries, strawberries, raspberries, and much more. Wherever you go, just bear in mind that English is not widely spoken and most signages are in the local Kyrgyz or Russian language. A pro tip would be to download Google Translate even before you land here. अरे चले भैया, मैं आपको बताता हूँ। This is our host Marat. जितनी चटाकेदार ये हिंदी बोलते हैं, उतनी ही मजेदार है इनकी कहानियाँ। सलाम अलैकुम ब्रदर, मेरा नाम मारत है। I am from Bishkek. But I have studied in India for 5 years in the military, definitely. मैं तो हिंदी थोड़ा बात कर सकता हूँ, लेकिन without practice मैं तो भूल गया यार। बिल्कुल भी नहीं भूले आप, बिल्कुल भी नहीं भूले आप, तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। Yeah, there's I myself born in Jalalabad city and raised in Bishkek city. So after graduating the Indian military, the Kyrgyz military school, I went to the Indian military academy. Like by studying in India, like most of the time we spoke in English, you know. So we try to learn the Indian language too, like saying like Tora, चलो क्या यार, क्या बात कर रहे, क्या कर सकता है या भैया या छोड़ देना यार, like this kind of words, you know. This one we find everywhere in all the corners. Yes. And these are from different companies. No, this is the only one company. Which is? It's called the Shoro. Shoro. It's a Kyrgyz traditional drink. Okay. On almost every street corner of Bishkek, I saw these ladies sitting under umbrellas selling some beverages from 3 different colored containers. Now with Marat around, it was a good idea to taste and know more about them. Yeah. Let's try first this one. Okay. 이제 bizga kvassdan bir qospa. Oh. This is kvass. She says, you know, you can taste it. That's a big glass. Yeah, big glass. That's very nice, you know. And
it cools down your taste, you know, thirst. Oh. Thirst. You know, Cools it's down very the much thirst. like kombucha. So in Yeah. India, you get fermented tea. Fermented tea. That's Oh, called yes, kombucha. yes, It's very yeah. much like, and It's also, she says, made from the wheat, but bread, and then they put it into the one big pot, and they hold it for long days. You know, add water, Okay. you know, and then later on, you know, they put into the filter. That's how it comes out. You know, this very nice. but very it's beautiful. non-alcoholic. No, it's non-alcoholic. Non-alcoholic. Yes, non-alcohol. All three of them are non-alcohol. You know, you try this one. This is This a is chalap. it's chalap, called. okay. Yes, this is chalap. This is very much like buttermilk that we get in India. Buttermilk. Yeah. Yes. I don't know if same you as remember like- छाछ. India में छाछ बोलते हैं, लस्सी Yes, बोलते हैं. Lassi, Yeah. yes, same exactly. It's Lassi, yes, it's quite yes. like that. Yes. Osh Bazaar is a good place to visit on your first day. It's a bustling market where you can find literally everything you need, making it the perfect spot to stock up on supplies for your journey. It's also a great place to wander around to get an introduction to Kyrgyz life, with interesting stalls selling food, spices, clothing, and more. सिटी कोई भी हो, उसका जो असली जायका पता चलता है, उसके जो असली फ्लेवर्स पता चलते हैं, वो है जो भी उसके ओल्ड मार्केट एरियाज़ हैं. तो जैसे दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली सदर बाज़ार, और वैसे ही ये है ओश बाज़ार, जो बिश्केक का सदर बाज़ार कह दो. बहुत बड़ी मार्केट है. अभी तो हार्डली हमने थोड़े बहुत सेक्शंस ही देखे हैं, फ्रॉम फ्रूट्स टू मीट्स टू वेजिटेबल्स एंड फाइनली ओवर हियर जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमें दिख रहे हैं, और वो भी इतनी वैरायटी. मतलब एक एक चीज़ उठा लो ना, अगर बादाम उठा लिया, ड्राइड एप्रिकॉट्स देख लिए, उसके ही अलग अलग कलर्स इतने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं. आई थिंक और कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊँ ना जाऊँ, बट आई थिंक ड्राई फ्रूट्स आर माई वीकनेस. सो ये तो पैक हो रहा है. $400. 400. ओके एंड 150. इतनी शॉपिंग ना मैंने कभी किसी कंट्री में नहीं की, लेकिन आई थिंक ड्राई फ्रूट्स देख के मन मचल गया. What is this? Kurut, cheese. Kurut. Professor, ओके. ये सबके बस का नहीं है. तो इसके पास से भी गुजरो ना, बड़ी चीज़ जैसी स्मेल है. तो ये कुछ मिल्क प्रोडक्ट है, और वो भी मतलब ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, एंड है बहुत ही पंजेंट, खट्टा सार सा फ्लेवर है. सो इट इज़ द ड्राइड चीज़ का कुछ तो फॉर्म. बट एक्चुअली अब 2-3 बार ऐसे ही बोलते बोलते खा लिया है, तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम में सबको नापसंद आए. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. While Kyrgyzstan in some ways looks quite similar to India, a few things that were way better than back home were the comforting laid-back pace, cleanliness all around, adherence to traffic rules, and these lovely green spaces and parks all around the city. In just a couple of days, Kyrgyzstan has given us a glimpse of the sensory feast that we can expect, with views changing every few kilometers. From the Cosmo Bishkek to the pristine countryside and its nomadic lifestyle to a bunch of unexpected adventures and misadventures, this Kyrgyzstan trip will be special in so many ways. So let's tighten our seatbelts, shift the gear and press the accelerator as you and I get ready to untravel Kyrgyzstan. Salam. जिरगिलान के एक रिमोट विलेज पे हम लोगों को ये ब्रेकफास्ट स्प्रेड मिल रही है. दिस इज मी एंड दैट्स तुलपरताश. तो इसका एक फोकलोर भी है कि मानस वॉज एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ दिस रॉक
along with his horse, और वहाँ से वो कूदे थे अपने enemies के ऊपर to attack them.